हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, शुरू करते हैं खेलना। इंट्रोडक्शन बाद में, पहले चेस खेलेंगे। ओके, सो वी हैव अ सीएम। सीएम के साथ खेलते हैं। किंग्स इंडियन, ग्रूनफील्ड। फाइन, आई प्ले ग्रूनफील्ड, नो वरीज। बिशप निकालते हैं, मारेगा मार देंगे। बिशप G4 F3, now बिशप D7 में भी एक चेक। क्वीन F5, बिशप D2। बिशप मर रहा है, बिशप पीछे जाएगा, कैसल अप। व्हाइट की पोजीशन इज वेरी साउंड। लेट्स सी। Okay. Now I can actually take on F7, take here, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है. You know what? I can take here, take check. I can take check और knight मर रहा है, knight पिट रहा है simple. I win a piece, I win. I win a piece, I win. I'm happy. That's it. Uh, so yeah, decent. Hello Tenzin 974, कैसा है यार? Welcome to the stream. तो कुछ खास हुआ नहीं इस गेम में. I'll be very frank. कुछ हुआ नहीं, ओपोनेंट ने बहुत गंदा खेला. पीस निकाले, मारा. ये सब तो थियरी है. ठीक है, बिशप G4 F3, मारा, मार दिया. अब यहाँ पे सिंपली FG4 और that's just winning. I win a piece, I'm happy. तो CMG ऐसे ही धुल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यू गेम, नाइट निकालते हैं. ओके, E6. I'll play Queen's Indian. I'll play Queen's Indian. Next, I'm thinking of playing Bishop E7. I wanted to play Bishop B4, but that's fine. I'll play Bishop E7, and I'll just castle up. But the idea of C5 looks good. They can push G5, which is a bit annoying. But that's fine. I'll just stay stick. I think I can play a closed Queen's Indian, where my position is indeed bad, but I need to find a way to get something. I'm thinking to just close down the position on the queen side. Maybe it might help. It might help, maybe, who knows. I'll level up my knight to b4, which looks good to me at least. I'll go back with the knight. Now if f5, then f6. Get my king on the queen side, and maybe I can fight. Let's see. Can you play with me? For sure I can play with you. Just send me the challenge, Tenzin. I would love to play with you, bhai. Knight takes the pawn, and now bishop f6 looks like a good piece. Now bishop c8 maneuver is also a typical good idea. Putting the bishop on g4, getting the knight to b4. First bishop g4 looks good, attacking the queen, and then taking on d3 with the idea of knight b4. Bishop d4. I'm getting all my pieces into the game. I'm happy. And that's it. What else do I need? Now bishop g5 also makes sense, though I have a knight f4. I don't want to make the position too much of a mess. I'll just develop my pieces. I'll just focus. I'll focus on developing my pieces. Now bishop g5 indeed looks good. I'll play bishop g5, and it's hard to find some good squares for the queen. Queen f2, I'm having at least knight d3. Queen e1, I'm at least having knight c2. It's very hard to play with the white pieces. What the? भाई ये क्या?
कौन खेल रहा है बेशरम मेरे अकाउंट से? एक सेकंड में। स्ट्रीम ही ना करूँ क्या? मैं स्ट्रीमिंग बनी नहीं है कि मैं नेटवर्क वर्क इतना गंदा स्ट्रीमिंग। ओके, नेट चेक करने दो भाई, उससे पहले मैं शुरू नहीं करूंगा। 55 Mbps, ठीक है। आ जा भाई। E3 बुलेट खेलना पड़ेगा, पोजीशन तो वैसी है और टाइम भी वैसा ही है। ओके, थोड़ा जल्दी खेलना पड़ेगा गाइस, सो प्लीज डोंट माइंड अगर मैं बात ना करूँ इतनी, बिकॉज आई नीड टू विन। टेक स्टिक्स, now f4 bishop g4 looks good. f4 bishop g4, put the knight to b6. I'll castle. Fuck it. Fuck the network. Even bishop g4, knight b6 looks good. I'll sack a pawn to get knight b6 in. Even queen e3 is good. I'll take. And castle on the long side. Threatening rook e1, knight b6 is jumping in. I'll start with the check. Knight b6. Queen e3. I think even queen d3 was much better, maybe. Bishop g5 for. Queen h6 is what I'm threatening, maybe. He's having king g8 though. But okay, let's see. I'll take. Queen f4.
King b1. Now if g4 looks a strong move. Expecting rook f8 maybe. I'll try g4. Try to get the pieces in. G5. I can take. That's a bad calculation. He gave up the piece. Ah, now this is lost. This is a lost game now. I'll give some checks. भाई मुंह तोड़ देना है मुझे. ओके भाई तू नेटवर्क फिक्स कर, मैं गेम खेलता हूँ लॉल. हेलो कोजी 6218 कैसे हो भाई. हेलो ब्रो लॉन्ग टाइम नो सी. हेलो भाई कैसे हो गाइस. गाइस एवरीवन हु आर वाचिंग वेलकम टू द स्ट्रीम भाई. वेलकम टू द स्ट्रीम. बहुत गंदा खेल रहे हैं अभी बिकॉज मैं अपने दोस्त मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा आज. ओके d4 c4 नाइट निकालते हैं. Let's play the Queen's Gambit. Okay, let's play the anti-Queen's Gambit. The anti-Queen's Indian. D5. Okay, bishop e7 allows d5. I'll take the initiative. E4. Now this is good for white, generally speaking up. Now b4 was the main move, if I'm not sure. Yeah, maybe b4 was the main move. Now if it's supposed to be bad, I'll just develop. And now there has to be something bad. I'll develop my knight, centralize my knight. And knight generally goes to. Okay, I'll put the knight to f5. I'm still having my position. Now, putting the knight to b5 makes a lot of sense as I'm putting pressure on the pawn on c7. And now the bishop to d3 looks a good move. Just defending the pawn. Though I was losing e4 pawn. One move earlier. And knight e3 also looks a fine move. I'll pull the knight back. Now, queen a8. I'm at least having knight c7. The queen is sort of fixed. So I'm pretty comfortable in this position. I'll castle up. If he wants to take, he can take. I'm still having a fine position. Now I'll use this opportunity to get my king, to get my queen. And now I'll just get my rook as well. भाई नेटवर्क इतना गंदा कैसे हो सकता है यार. And now what? I can play f3. Just in case, I don't know. Knight c2. Pulling the pieces back. कुछ break ही नहीं मिल रहा यार. That's insane. That's insane. I'm not getting any breaks. Bishop f1. Now I want to get the c5 break in by knight e3 c5. I think if c5 break mil gaya, the position should be good. Knight e3 c5. c5. It's of course not now c5 because he's having the knight. But I'm definitely aiming for c5. And you know what? G3 looks super good. G3 knight h5, bishop h3.
Bishop on a good diagonal. I'll play g3. Bishop h3 looks a very good move. Knight f6, I'm having c5. I'll play bishop h3. Finally, I achieved bishop h3. Now, if we move the queen, I'll just take and take on c7. If it doesn't, I'll just play c5 anyways. I'll play c5 anyways. I'm having a good position. Takes. You can't take with the knight, the queen's hanging. He takes with the pawn, I can just take it back with the rook. And I'm having a pretty fine position. You can't take the rook, the queen's hanging. And I'll just trade off the queen now. I can even take with the knight, but I'll just take with the rook. Because his e5 pawn is also sort of soft, which can be easily captured. And now this should be good enough to win. This is winning for sure. I'm thinking actually to do something different. Okay, you know what? I'll just come back. ज़्यादा रिस्क लूंगा नहीं मैं. पीछे हटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉन अप हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आराम से ग्राइंड हो जाएगी पोजीशन. कोई जल्दी की बात नहीं है. वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन दो गाइस. भाई वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन तो देना है. कास्पारो वेरिएशन ई फॉर हैंगिंग. ओके. अरे वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन गाइस, मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ. मैं अभी बहुत जल्दी, मैं कल से एक्चुअली, या शायद आज रात से प्रिडिक्शन डाल दूंगा जो मुझे लगता है अगले राउंड के प्रिडिक्शन होंगे. तो जिसको भी बेटिंग करनी है, स्पोर्ट्स बेटिंग, आप समझते हो ना, पैसों पे अगर आपको किसी पे भी लगाने हैं, सो या यू कैन यू कैन जस्ट यूज माय प्रिडिक्शन एंड आई गेस आपको, आप लोग को मदद मिले. ठीक है. और अगर आप जीतो तो थोड़ा शेयर भेज देना मुझे. ठीक है. This is winning for sure. This is winning for sure. Push. This is the super. Yeah. So good game, good game. Okay, let's uh, let's review the game. Let's review. या फिर छोड़ो यार, रिव्यू तो खुलता ही नहीं है. For some reason, I don't know why. Actually खुल गया शायद नहीं खुला. I think game was pretty good. B5, E4, B4 also makes sense. B5 खेलना चाहिए था, but ठीक है. I think overall the position was very comfortable for me throughout the game. I believe I played a good chess. I played a good chess. I played good chess. Of course, I was having a big advantage, but that's fine. Okay, chocolate lover, आजा नील. खुद तो लॉस में चलता है अभी. अभी Okay, yo GG, you won. I'm your hello honey piano. Welcome to the stream. Guys, send me the challenge. Challenge दिख नहीं रहा, इसलिए मैं न्यू गेम खेलूंगा. ठीक है. ओके, नाइट निकालना था, बट ओके दैट्स फाइन. I'll play e5. बिशप निकालते हैं. e6. Now, f5 also makes sense. f5, knight f6, castle up. I'll develop the knight. Now, bishop g5, I'm having bishop f. Bishop f2 नहीं आ रहा because he's having this. You know what? I can take. Knight takes bishop b4 check. Now you know what? नहीं, work नहीं कर रहा था. King e2. What's king e2? g4 check. Then castle up with the reduced. Knight f7 makes sense. Bishop g4 check. That's equally good. Okay, the position is very interesting.
घोड़ा निकालते हैं भाई, बाकी सब भाड़ में जाए। अपने घोड़ा निकालेंगे गाइस, लेट्स प्ले। हाँ भाई, इसके बाद खेलते हैं। कैंसिल कर लेते हैं। भाई तो गर्मी हो रही है, माँ कसम, रुको भाई। कहाँ चला गया? ओके, अब खेलने दो चेस। अब खेलते हैं चेस। अब अच्छे से खेलेंगे। घोड़े से मारते हैं घोड़ा। घोड़े से घोड़ा मार दिया गया है दोस्तों। घोड़ा बीच में बैठाएंगे अब। ओके, टेक्स टेक्स। कोई ना, छुपा एल पे एच सिक्स खेलते हैं, बस बच बैठा। और अब मार देते हैं। क्वीन निकालते हैं। बिशप F5, क्वीन G5, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। Many moves are available. I'll start with bishop F5। G4 कभी नहीं आ रहा दोस्तों, पहले बता रहा हूँ। क्वीन G5 चेक है मेरे पास ऑलवेज। with rook F4, rook F8, and definitely I'm loving black's position. Rook F4, rook F8, G4 का प्रॉब्लम नहीं है। G3 पे I'm having rook D4, very comfortable position। Let's see। Queen F7। Okay, now I'll first get the rook to F8। F3 पे मारेंगे पहले तो। Okay, now push, push। टू स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग। मारा तो रुक मर रहा है। नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। क्वीन मर रही है अभी। पुश, किंग हटा लेंगे। किंग H8, वेरी सेफ मूव। अब रुक चेक आ रहा है। दिस शुड बी ओवर, दिस शुड बी ओवर। ओह, टाइम बर्न हो रहा है मेरा। जल्दी खेलना पड़ेगा। चेक, चेक। हाँ, ओके, ना ना, दिस इज विनिंग थैंक्स टू वाइट। किंग C1 नहीं खेला, किंग C3 खेला, है ना। दिस इज विनिंग। पहले क्वीन से मारूंगा। चेक। अबे यार, जैसे है। भाई अगर ये बच गया ना, दिस वुड बी सो अनोइंग, सुपर अनोइंग। Let's go. Let's go. Let's go, guys. Let's go. That's how you win. That's how you win. Yeah. Can we play on 2100? For sure. Polytop products. Hello, Yash OP. Hey, you come into tournament on December 24 December in Vadodara. 14 December in Vadodara. Not sure, भाई. Not sure. Sure नहीं हूँ, but let's see. शायद मैं कहीं और जाऊंगा, but who knows. Let's see. पहले तो देखते हैं क्या हुआ ये इस गेम में। वैसे मैंने F6 गलत मूव खेला। हनी पियानो रैपिड नहीं खेलना है यार, ब्लिट्स ब्लिट्स इफ पॉसिबल।
Let's play chocolate lover. Anyways, let's play 1d4. Let's play c4. The queens are okay. We have the Grunfeld, of course. Bishop c4, knight e2, takes 6, castle, castle, bishop e3. Now b6 पे क्या था? Yeah, queen d2, knight f5, okay, bishop e7, rook d1, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. Hard to remember. मार सकता हूँ क्या मैं? शायद. I want to try. Take, I'll take. You know what? I'll just take. I'll take another pawn. दो pawn मिल रहे हैं, why not? And bishop f4 makes sense. Bishop f4 makes super sense. I want him to push the pawn. ठीक है, मैं चाहता हूँ push करे. Actually, queen d7 would have been super good. But bishop f4 also makes sense. ठीक है, bishop निकालते हैं. मैं चाहता हूँ e5 आए ताकि मेरा लाइट पे bishop भी खुल जाए, उसका bishop भी block हो जाए. It makes so much sense. Queen c8 and now. Queen d7 makes so much sense. Even e5, knight d4 makes sense. So many moves that make total sense. Actually, I'll pick queen b2. Queen b2 is out, knight f5. हाँ, इसलिए नहीं मारना चाहिए शायद. Better not five. No, it's still fine. Knight f5, bishop d3, rook c1. I'm maybe still getting the pieces. Maybe queen e3 would have been much better. Queen e3 थोड़ा ज़्यादा slightly better होता maybe. But that's fine. Yeah, queen e3 शायद थोड़ा slightly better होता. Still attacking. Now knight c4 I can at least take and take on b6. Let's see. Hello, Kumar Prast. कैसे हो भाई? Hello, Yash OP. And I also wanted to ask, why didn't you come at Grande? There was also GM. मैं कहीं और गया था actually, इसलिए मैं नहीं आया. I was playing some other event. I'm a chef. Walking back. I'll give it a try. Take. हाँ, okay, मैं सोच रहा था मार सकता हूँ, but I can't take. That's the main issue. I have to pick a phone then, right? No, no. Now, of course, it's the equal possession. Maybe black must be slightly better. हाँ, black better होगा slightly, but yeah. Okay, let's see. Rook f1. Okay, let's take. Let's just take. ना रिकनेक्टिंग वापस से ये हरकत नहीं चाहिए भाई मुझे. बस हो गया खत्म, रुक जाओ. h3 फाइनली बैक रैंक से छुटकारा मिलेगा. अब रुक c1 से रुक घुसेगा अंदर. रुक घुसाते हैं अंदर दोस्तों. रुक घुसाते हैं अंदर. I think black position better. C8 point पे, but he misplayed a bit, but that's fine. Bishop, I can play bishop g3. I can play bishop g3. Well protected. और अब रुक आ सकता है गेम में. Rook c1, rook c7, rook c8, rook d1, rook d7. कौन मर नहीं रहा, no problem. I play rook c1. H6, no. Wait. But still मुझे कुछ करना पड़ेगा. Maybe need to use my queen or something. Like queen defense जैसा कुछ. But if I'm able to achieve this, queen over here, rook over here, still nothing is happening, then I'll try. I'll try rook b1.
Rook b1, queen d7, rook b7. Okay, queen d7 would be a blunder. Bishop f2 आ रहा है. I'll try queen e7. Queen e7, king h2 maybe. Hard to play. It's hard to find a move. Ah, यार अबे क्या मिस कर दिया यार मैंने. बहुत गंदा खेलते हुए, बहुत गंदा खेलते हुए, बहुत गंदा खेलते हुए. वैसे मैं एक्यूरेसी देखना चाहूंगा. बहुत हॉरिबल चेस बाय उज्जवल बंसल. दैट्स फॉर श्योर. रोड हो जा भाई. क्या कम ऑन, क्या खेला मैंने यार. क्या खेला. हॉरिबल चेस, हॉरिबल चेस. 97. 94 गलत. 94 सही है कि गलत है. आह, रुक जाओ भाई. Let me check. Let me think. That makes sense. Knight d7, c5 weak है. I can easily pose problems. I'll use queen d6. Queen e3. Queen d2 is a bit annoying. a5? Queen e3 allow कर दिया. Surprise. Allowed me queen e3. That's a surprise. And I'll check knight d6. Okay. अब टू ब्लंडर्स. दो ब्लंडर कौन सा था पहले भी. हैंग हुआ था क्या. आई डोंट नो. कुछ तो हैंग हुआ था मे बी. लेट्स सी. Very, I played extremely bad chess, that's for sure. That's okay. Now, I'm having a bad position. Simply bad position. Simply bad position. That's the thing. हो जा भाई. Come on. Chesscom lag कर रहा है. Something is wrong. Okay, knight b3. 94 looks good. Knight f4. Knight c5 अलाउ नहीं कर रहा मैं. Knight e7 लेके c3 पर अटैक कर सकता हूँ. Even knight b2, knight c4. Ideas are there. I just need to understand them. King e7. h6. लैग हो रहा होगा. या मे बी. हाँ, 85% एक्यूरेसी. क्या गलत खेला मैंने. गलत मार सकता हूँ एग्जैक्टली. अब मारना गलत था. आई वाज थिंकिंग समथिंग इज रॉन्ग. बिशप g5 खेलना चाहिए था. क्वीन e3 makes a big mistake. Okay, so this was a horrible blunder. Queen e4 पे f3 सोचा था मैंने. But yeah. This was extremely dry. I should have taken a draw. King h2 or something. I just blend a piece. Okay. कैसे खेलना है. इसको कौन से मारेगा ना बेटर मारेगा.
आह कौन से मारने की बात कैसे खेलूं मैं? अब बैक क्वेश्चन आई पे रुक सेवन। ओह जस्ट डबल करते हैं C5 पे, मेरा सोचना नहीं है। मारेगा मार लूंगा। फाइन पोजीशन, and at least the e pawn be a bit soft. He can't take on C6 because triple attack हो जाएगा. You know what? I can at the very safe side. I can just move my knight from C6 and just attack his C3 pawn, and perfect. That's a perfect position. That's a perfect position. Let's see. Chat miss. Uh oh, knight B2, फिर knight C4. Nah, not a good idea because knight C4 पे कुछ कर नहीं रहा है. Can at the very least he can take. At the very least, or I can just move those pieces. Who doesn't want to take? I'll just take with the rook. I'll take with the rook. The rook. Uh, okay, मुझे rook pair of rook trade करना है ताकि मैं knight f7 से मार पाऊँ फिर, which looks like a nice plan. Knight से मारूंगा, सोचा था मैंने एंड गेम खेल लिया ना. Maybe white will push. The knight c4 ट्राई करूंगा, दोनों knight यहाँ बिठा दूंगा. I can create some pressure. I'll try to create some pressure. उसको बिशप पीछे लेके जाना पड़ेगा, and he failed to do so. So I'll use this opportunity to grab some pawns. Nothing is happening. Knight c4. Where is his progress? I can see his progress, but where's my progress? मैं घोड़ा लेके भी जाऊं तो कहाँ लेके जाऊं? Good question. हाँ, टाइम भी नहीं है मेरे पास. That's insane. कुछ ट्रेड भी होए तो बात बने. This should be good. शायद हाँ. Maybe this is fine. मुझे तो पहले pawn push allow करना चाहिए था. Doesn't make sense मैं यहाँ पे खेला हूँ. It absolutely doesn't make sense. क्या खेल रहा हूँ मैं? चेस भी खेल रहा हूँ कि चेस खेलना भूल गया हूँ यार. फ्रेश क्या खेल रहा हूँ मैं यार? हॉरिबल चेस.
क्या गेम। ओके। 2-0। 2-0 हारा हूँ मैं। 2-0 कैसे हार गया यार। रुक जाओ। क्वीन बी 6 खेलना चाहिए था। बट स्टिल। क्या मस्ती है भाई, मतलब वाइट ब्लैक खेलेगा कैसे फिर, एक सेकंड। कैसल। क्वीन F2। H6। क्वीन B6। नाइट B6। पर मैं कैसे जीतूं यहाँ पे। F6। नाइट D4। नाइट D4। नाइट D4। F takes 6। रुक F4। मैं जीत ही नहीं सकता क्या मैं। टेक्स DC4। ब्लैक कैसे जीतेगा ये ग्राइंड करूँ क्या। ये भी ग्राइंड नहीं, यहाँ पे वाइट ग्राइंड कर सकता है। हेलो अर्षद भाई, कैसा है भाई। अबे नहीं यार, मतलब आई डोंट सी कि ब्लैक कैसे खेलेगा यहाँ पे, मतलब ब्लैक चेस ना खेले यहाँ पर। क्वीन B6 बेस्ट मूव। बेस्ट। कैसल इज द बेस्ट मूव। यहाँ पे H6 is the best move. Okay, I think a fighting position would be takes and F6. Takes and GF6. Adjust this a bit more fighting. तब भी knight B6 and eventually E5 getting break something something. Okay, ये तब भी थोड़ा fighting position है. I'll aim for this. Okay, अगली बार ये खेलूंगा. I'll just take and get the F6 break. But yeah. Okay, new games. Knight F7 जल्दी खेलना था. Bro, your position is completely paralyzed. Yes. Okay, knight of 6. D5. बिशप निकालते हैं. pawn push कर दूंगा. Push. Bishop E7. Knight D7. C6. Okay. Bishop G6. मारेगा, मार देंगे. Okay. Castle up. I think Knight G4 अच्छा लग रहा है. I'll try Knight G4. E4 is a good one. Bishop F6. Then Knight G4, Bishop F6 Faustino औरों खेलता है, which is very interesting way to play. अगर तुम्हें ओपोनेंट को अपना बैट पीस ट्रेड कराना है, it's very good. Okay, I can take Knight C5. क्या मैं, हाँ मुझे एक सेकंड. Knight centralized. I can take Queen F6 सोच रहा हूँ मैं. अगर I'll take और फिर Queen F6. Knight E5. Let's see. अरे दो हर्षित आ गए गाइस. नेक्स्ट टाइम यही वेरिएशन खेलेंगे. डन भाई. दो दो अकाउंट से देख रहा है हर्षित भाई. भाई क्या लिख रहा है हर्षित भाई ये सब. डोंट यूज फाउल लैंग्वेज.
Queen f6. Ah, okay. This is comfortable for black, I believe. Rook d8 because knight है मेरे पास knights. I'm having knights, and the position is sort of closed. Knight g4, knight h6, knight f5, knight e3. Knight e3 a move is good move, I guess. Okay, and then just one. Hmm, yeah, let's get the open file. ओपन फाइल ले लेते हैं पहले. रुक आएगा. अब मैं एंड गेम में जा सकता हूँ which I won't prefer. So what I'll do here is I'll go in the rook end game. क्योंकि एक ओपन फाइल है, I'm having the open file, so I'm having the advantage to convert the possession into a win. ये क्या भाई, मैंने नहीं खेला यार, कम ऑन. नहीं खेला मैंने. एटलीस्ट रुक तो यहाँ पे खेल देता. Okay, you know what, I'll get the draw because possession है नहीं win जैसी. So I don't want to fight meaningless. I don't want to play meaningless. क्या ये है क्या भाई. ड्रॉ है, ड्रॉ है, ड्रॉ है, ड्रॉ है. भाई नहीं, ये नहीं हो सकता. कह दो ये झूठ है. भाई यार ये 50 मूव खेल के भाई हरा देगा. टाइम ही नहीं मेरे पास. यो उज्जू भाई, की हाल चाल, कैसे हो भाई? वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस. ओके, बहुत गंदा खेला. ऑब्वियसली ड्रॉ थी. आई थिंक गेम काफी सॉलिड खेला मैंने. प्रीटी हैप्पी विद द गेम. ऑफ कोर्स नाउ ब्लैक इज प्रेसिंग. GF6 मारना चाहिए था, GF6. This is a complete draw. बट यहाँ पे ऑफ कोर्स ओपोनेंट लैग कर रहा है मुझे, सॉरी. लैग भी. भाई नेटवर्क आ नहीं रहा, वरना मैं दिखाता ब्रो. कल की स्ट्रीम क्यों ऑफ कर दी थी भाई? कर नहीं रही थी यार, नेटवर्क खराब आ रहा है आजकल. आजकल जब से नेटवर्क स्विच किया है, पता नहीं क्यों किया है, पर ठीक है. आ, अपने चेस डी 2017 के साथ खेल रहे हैं. हु इज एन एनएम. एनएम को हम अपने वहां रखते हैं. बिशप e3. पुश. ओके, अटैक करना है. छुट्टा अटैक.
Takes. I'll take. I'll accept his challenge. डरते हैं क्या वे? बिशप निकालते हैं G5 पे. बिशप E3. Takes. Rook G1. Bishop F2. Bishop. Queen F2. And this is just winning. मेरे तेज वालों को खेलना नहीं आता है क्या एनिमी के लोगों से? रुक D4 पे C5 F4 कर दूंगा मैं. ओके मिस कर दिया था. अबे यार ये थोड़ा गलत. जीत रहा था, मैं जीत रहा था. ओके लेट्स चेक. यहाँ पे मारते हैं पहले तो. और अब नाइट से मारते हैं पॉन पर अटैक. थैंक यू फॉर द पॉन. चलो भाई लेट्स गो. ये मार लेंगे, अभी विनिंग है. ये एंड गेम विनिंग होनी चाहिए. होनी नहीं चाहिए है. विनिंग है, होनी नहीं चाहिए. विनिंग है. तूने बोल दिया जो है तो है, बात खत्म हो गई. चेक. किंग लाते हैं. किंग ऊपर. अपने किंग एंट्री मिलनी चाहिए, किंग को एंट्री मिलनी चाहिए. किंग को एंट्री मिल चुकी है दोस्तों. और अभी विनिंग है. मैं बोल रहा हूँ ना विनिंग है तो विनिंग है. अबे यार हगी दिधू. बे यार ये नहीं चाहिए था भाई.
ठीक है। मैंने जानबूझ के खेला था कि ड्रॉ मिल जाए, वरना वो मुझे फ्लैग कर देता। ठीक है। समय का खेल है भाई। समय का खेल है भाई, सच्ची में। कम। गेम वॉज वेरी डिसेंट। G4 पर, G4 का हमेशा H5 सोचता हूँ मैं, मुझे प्ले नहीं मिलता वहाँ पे। या जस्ट हाँ। यार G4 मेक्स सेंस। मैंने सोचा यहाँ पे मारूंगा, मैं मारूंगा। ये एकदम बेशक पीछे जाते हैं मार। ये कंप्लीटली विन है ये। और बिशप F2 सही खेला। ये भी सही खेला। तो यहाँ पे E5 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। या मिस प्ले, बट स्टिल आई फाउंड द वेरी गुड वे टू गेट एन एडवांटेज। हम पे A4 खेलना चाहिए पहले, A6 ना A5, जस्ट ब्लॉक एवरीथिंग। अरे विनिंग है। ये भी विनिंग है। वाओ, दिस इज आल्सो विन। यहाँ पे A4। ओके, मेक सेंस। इंटरेस्टिंग लाइन। मैंने ये खेला, और मजे क्या थी, ये भी विन हो गई। लीडरशिप पे किंग E4 ओनली, which is very hard. And of course, this is winning. B6 wins, but टाइम मेरे पास था नहीं, इसलिए ड्रॉ ले लिया। बट ठीक है भाई। गेम टेक यू। भाई मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे गुजराती अच्छे से आती नहीं है, तो प्लीज हिंदी में लिख दो। नाइट निकालते हैं। भाई आपका आवाज सब चेंज हो गया। हो गई ला। हो गई लाई। भाई अभी मैं ऐसे अलग बैठा हूं, इससे लग रहा है आप लोगों को। E3। चलो एटलीस्ट नेटवर्क तो अच्छा आ रहा है। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। एंड गाइस, लेट्स एंड द स्ट्रीम इस गेम के बाद, बिकॉज काफी टाइम के बाद स्ट्रीम कर रहा हूँ, सो आई एम अ बिट टायर्ड आफ्टर ओनली आफ्टर 1 आवर। बट यार थक तो गया हूँ 1 घंटे के बाद ही। पूरे 495 आ रहा है। 95। should be 7। एक बचे necessary। The bishop D2 makes sense. A bishop F1। I'll play F4। F4 looks fine। भाई मैं बोल रहा हूँ बंद हो जा, मत खेल मेरे अकाउंट से। मत खेल भाई। मत सोचना भी मत खेलने की। खेलेगा, अभी भी खेलेगा। मत खेलना देव, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुझे। मत खेलना, प्लीज मत खेलना। मुझे सोचने दे।
हम्म। रुक जाते हैं। अब भाई क्या मस्ती है बे। अबे यार खेलने ही नहीं दे रहा यार। खेल खेल पहले तू ही खेल। चेक देने दे मुझे शांति से खेलने दे भाई। मस्ती मत कर। मस्ती मत करो खेलने दो शांति। हाँ, भाई ये क्या मस्ती भाई, ये तो मैं भी खेल लूंगा। मत खेल मत खेल भाई, खेल लेने दे। भाई क्यों यार, क्यों नहीं खेलने दे रहा। भाई तू 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 मत खेल भाई, खेलने दे, मैं मेट कर दूंगा। ओके गाइस, यू नो व्हाट, लेट्स एंड द स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि एक साला मुझे खेलने नहीं दे रहा। ठीक है भाई, मैं भेजता हूँ एड्रेस, एड्रेस है मेरे पास, ये देखो मकवाना करके है। इसकी मारनी है। आई नो सम चेस, बट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट दिस सीरीज, बट इट इज हार्ड। वैसे आप लोग खेल सकते हो, बहुत इजी है। बट गैस कल मिलते हैं, आज मैं थक गया हूँ, 1 घंटे में ही थक गया मैं। बट या डेफिनेटली कल से अच्छे से, कल से अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को मजा आया। मजा आया तो सब्सक्राइब कर देना।